Hello everyone and welcome to Learn Git and GitHub session. I'm your speaker Khan Zaki Rahman, DSC AIKTC Web Developer Lead, and along with me is Daniel. Daniel, please will you please introduce yourself? Hello everyone, I am Daniyal Dolare and I am UI UX lead for DSC AIKTC. So Zaki, let's get started with the session. Okay. So before starting the session, I would like to you go through the agenda of the session that what thing we will learn in this session. So first we will learn the introduction to Git and GitHub. Then we will see the workflow of Git. Then I will teach you guys how you can install the Git, and then we will do some work with the Git, and then we will have the break. And after break, Daniel will continue. So Daniel, will you please tell your agenda? Yes, so after the break, the first thing you will be doing is you will be exploring the GitHub website, and the second thing is you will be making a remote repository, which you will learn obviously, and we will doing some next level stuff, which will be code reviews, and we will be creating GitHub organization and exploring what are these options in the GitHub. So Zaki, let's get started with the session. Okay. So first we have introduction to Git and GitHub. But before telling you what both they are, I would like to first teach what version control is. So version control are the tool that keeps the track and manage your code. And big software companies use the version control to work smarter and faster. Also, if you face any issue, version control can be like the version control can resolve it very easily. So to understand it much better, let us take an example. Like I am creating a basic website and I have deployed it and everyone like customer are interacting with it. And then after some time, I just thought of to change its look and change some backend, and the code works very well in my machine. But as I deployed the code again on the server, my website got crashed. Like the customer are telling me that like they are just calling me the Zaki issue where Zaki to solve like everything is messed up. So here where the version control comes. With the version control, what I can do that I can go back to the previous version of my code so that all the mess can be resolved afterward, and that the code is working. So version control are nothing but they just keep the track and manage your code. Also people use the version control to see that what update has been done to the code. Like for example, if Daniel gets my code of that website, he can see that what all code I have added or what all features I have been added. Also, and so now as you get the image of what version control is, let's talk about the Git and GitHub. But before telling you guys what both are, let me clear one thing. Okay, just let me clear one thing. Both Git and GitHub are a different thing, like Java and the JavaScript. Okay, so don't get mixed up the Git and GitHub are one thing now. They are totally different thing. So what Git is? So Git is a popular version control system that is widely used by the programmer, and the reason it is popular is that because it is free, it is responsible, and it is very easy to use. Like anyone can learn Git within a days. Yeah. And what GitHub is? So GitHub is a free cloud hosted platform for the code. It works with the Git, and the Git works with the Git, and you and your collaborator upload their code on the GitHub periodically, and then GitHub provides some tool to manage the code over time. So it's like Git is a backend while the GitHub is a front end of the Git. Like, yeah, so that's all what Git and GitHub are. Okay, so nothing much nothing but rocket science. Git is a version control tool while GitHub is front end. Okay, so now we get a basic idea of what Git and GitHub are. Let's move on to the workflow of the Git. So now let us imagine that I am working on a project with Daniel and my friend Farhan, and now we won't be keeping sending each other zip folder. Like it would be a huge mess if we just kept on sending zip folder to each other. Like we won't know that which zip folder has a updated code. Okay, so what we can do to solve this issue, we can use Git, and Git has provided us something called as repository. So now अभी आप तुम लोग सोच रहे हो कि यार repository क्या चीज़ है. So repository are nothing but they are just a container which store the code, and the Git just manage that repository or manage the container and everything. So there are two type of repository. The first one is a local repository, and the second one is a remote repository. So what local repository is? Local repository is a container that is on your PC. Like the container, it is on your PC. No one outside the world or no one outside the PC can view it. Like it has a code that only you and you can see.
while remote repository is a repository that you put on the GitHub and anyone around the world can see it, download it, change it, or whatever they want to do with, they can do with the remote repository. And the remote repository has the working code. Like the local repository is like the code in my PC, while the remote repository is like the code that is deployed on the server and people are just using it. Okay, so to more explain you about how this remote repository and local repository work, let me just share my OneNote with you and I will draw there and show you how they work. Okay, so yeah, I have my OneNote over here. Daniel, can you please confirm that OneNote has been sharing successfully? Yes. Okay, thank you. So So now let us imagine that me, Daniel, like the same example that me, Daniel and Farhan, we both are working on a code. So the code that is working, is in the remote repository. Okay, the remote repository has the uptil code and the code is working. And this is me, this is Daniel, and this is Farhan. Okay, so now let's take an example more that I am a backend developer, Daniel is front-end developer, and Farhan is a server-side developer. And now we both has the so now we both all of three have the same code in the remote repository. So now what I will do, since I am backend developer, so what I will do, I will add some code in my repository in my local. So this is a remote repository. Okay, this one over here is a remote. Sorry for my writing, I'm not good in the screen drawing. And these three are the local repositories. Okay, so these three are the local repository. So now I have added some code in my repository, like I have taken the code from the remote repository, like all of three has taken the code from the remote repository, and then I have added some code in it. So now if I want to share this my code with everyone, what I can do now, I can just put my code again on the remote repository. So it's like that ki I have taken the code from remote repository, I have added some feature to it, I have tested them and they are working. Okay, so the code that I have added are working, like they are not a broken code, they are the working code. So what I will do, I will then put my code on the remote repository. So putting the code from local repository to the remote repository, it is called as pushing. Like it's like I am pushing the code from my local repository to the remote repository. Okay, so what I did, I have pushed my code to the remote repository. So now Daniel and Farhan, I will tell them buddy, देखो भाई मैंने remote repository पे डाल दिया कोड, तुम लोग वहाँ से कोड ले लो. तो अभी क्या करेंगे दोनों Daniel और Farhan, they both will pull the code from the remote repository. So getting the code from remote to local is called pull, while putting the code from local to remote is called push. Okay, so what they will do, they both will just pull the code again. Okay, they will just put the pull code again to the local repository, and now again we have the same code. And then what Daniel will do, Daniel will then add some more code to in, like he will add the front end, he will add HTML, CSS, JavaScript, and then Swan will also add some kind of server ended code. And so what they will do, they will again push the code to the remote repository, and then I will again take the code from the remote repository. So that's how the developer and the repository, like sorry, the local repository and the remote repository work. The developer writes the code in the local repository, they test it. If the code is working successfully, they push the code to the remote repository. And if any other their teammate or any other developer write the code in their repository, so what they will do, they will pull that code from the remote repository. Okay, so that's for all about the git pull and push. Now the another main thing is that branch. And let me tell you guys, if you get to know what branch is and what the upcoming thing that I'm going to tell you, that is branch and the history. If you guys understand ना कि branch क्या होता है और history क्या होता है, मान लो कि तुम लोग है ना 90% समझ जाओगे कि git और github काम कैसे करता है. ठीक है, सो अभी सो हाँ, तो मैं कब से ऐसा बोल रहा था, लाइक मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों को गौर करके तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि गिट हमारा कोड मैनेज करता है, गिट हमारे कोड को देखता रहता है. तो गिट असली में क्या करता है, गिट डज नथिंग बट इट जस्ट कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल आवर कमिट. अभी तुम लोग सोचो कि भैया ये कमिट किस चीज़ का नाम है. सो कमिट आर नथिंग बट commit are just like you're telling the code that I have done some changes in this code at this amount of time. Like you are telling the GitHub कि भाई देख यहाँ ये मैंने कोड इस टाइम पे चेंज किया है. So it would be like in simple word बोलूँ ना तो git check commit is it is a checkpoint, like at this place
this all changes occur, so in the future if something goes wrong you can come back to the previous point and a commit isn't made whenever you save a file. Okay, ये मत सोचना कि यार मैं जब भी कंट्रोल एस दबाऊंगा कमिट बनेगा, नहीं, you have to make the commit manually. So okay, so now let us imagine that कि ये मेरा एक हाँ, और एक बात बोलना था कि whenever you make any repository, let it be local repository or the remote repository, it will have the main branch or the master branch has a default branch. So what default branch are? Default branch is a branch which have the code that is up to date. मैं तुम लोग को बोल रहा था कि हमारी रिमोट रिपोजिटरी के अंदर वो कोड रहता है जो अप टू डेट रहता है, लाइक द ब्रोकन कोड नहीं रहता, तो असली में वो सारे कोड रहते हैं कहाँ पे, हमारी मास्टर ब्रांच में. सो इस लाइन है कि तुम्हारी एक टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर एक पेज है, तो दैट्स लाइक तुम्हारी नोटबुक तुम्हारा रिपोजिटरी है और उसका कोई एक सेक्शन जो है वो तुम्हारा ब्रांच है. ठीक है. सो नाउ लेट अस इमेजिन कि मैंने एक रिपोजिटरी बनाया, हाँ मैंने कोई मुझे मेरी वेबसाइट वाले मैंने कोई वेबसाइट बनाया, हाँ मेरे वेबसाइट की कोई रिपोजिटरी बनाई. ठीक है. तो अभी मेरे पास तो क्या होगा, मेरे पास अपने आप नहीं आया, सॉरी. तो मेरा क्या है, तो मेरी एक ब्रांच बन जाएगी, एक ब्रांच बनेगी मेन ब्रांच. ठीक है. एक ब्रांच बनेगी मेन ब्रांच. ठीक है. और फिर अब इस मेन ब्रांच में क्या होगा कि अब इस मेन ब्रांच के अंदर हमारे सारे कमिट जो है ना सब रिकॉर्ड हो गए. लाइक मैं तुम लोग को बोला था कि गेट क्या करता है, गेट हमारे सारे कमिट्स का ट्रैक करता है. अभी कमिट कहीं ना कहीं स्टोर हो गए ना, लाइक ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ते रहेंगे, दे माइट बी stored somewhere, so they are stored in the branch. So what branch is? So branch is nothing but it is some kind of thing, it's tool that keep the record of all your branch. और अपना गेट जो रहता है वो इन ब्रांच को देख के बोलता है कि देख ऐसा कि गेट बोलता है कि ब्रांच बता कितने कमिट है, और फिर ब्रांच बता देखो भाई साहब ये सारे मेरे पास कमिट्स है. ठीक है. सो ऐसे इमेजिन करो कि मेरी ये ब्रांच बनाया मैंने, हाँ मेन ब्रांच बनाया मैंने. अभी इस मेन ब्रांच क्या है ना, मैंने एक कमिट मारा, पहले कमिट क्या है ना मैंने अपनी वेबसाइट बनाया, दूसरे वाले कमिट क्या है ना मैंने उसका UI UX डाला, तीसरे वाले कमिट क्या है ना मैंने उसका बैकएंड डाला. मतलब ऐसा मैंने ना बहुत सारे कमिट मारते गया, मैं बहुत सारे कमिट मारते गया. ठीक है. सो अब क्या हुआ, अभी इमेजिन करो कि मेरा अभी करंट वाला कमिट ये है. ठीक है. मेरा करंट कमिट ये है, लाइक मेरा जो कमिट है, जो मेरा मेन कमिट है वो ये है, लाइक जो वर्किंग कमिट है मेरा. ठीक है. सो अभी क्या हुआ, अभी इमेजिन करो जैसे कि मेरे ये वाले कमिट तक मेरी वेबसाइट सही से चल रही थी. ठीक है. मेरी वेबसाइट जो थी ढंग से चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ मज़ेदार चल रहा था. जैसे मैंने ये वाला कमिट किया तो शायद ऐसा कुछ हो गया हो कि मेरे से एक दो वेरिएबल ओपन नीचे हो गए होंगे, जिससे मेरा पूरा कोड क्रैश हो गया. ठीक है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर मेरा कोई भी कंप्यूटर मेरा कोड क्रैश हो सकता है, तो गेट बोलता है भाई टेंशन ना लो, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट रिवर्ट बैक टू द प्रीवियस कमिट. तो क्या होगा, ये वाले कमिट को मैं डिस्कार्ड करके मैं ऑटोमेटिकली पुराने वाले कमिट में चले जाऊंगा. तो मेरा अभी करंट कमिट क्या होगा, ये नहीं, मेरा करंट कमिट ये वाला हो जाएगा. तो ये है अच्छी चीज़ अपने गिट की, लाइक कि क्या हम लोग गिट से अगर कुछ भी तुम्हें कुछ गलती हुई तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट रिवर्ट बैक. ओके. सो ये सब होते हैं हमारे कमिट. ठीक है. अभी हाँ, तो ये सब कमिट के बारे में था. अभी हम देखते हैं कि ब्रांचेस काम कैसे करती है. लाइक अभी आपको मालूम तो पड़ गया कि हाँ भाई साहब ब्रांच क्या है, ब्रांच आर नथिंग बट दे जस्ट कीप द ट्रैक ऑफ टूल. ठीक है. सो नाउ लेट अस थिंक दैट कि ये मेरी मास्टर ब्रांच है. ठीक है. ये मेरा दूसरा वाला समझो, ये मेरा वाला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं दानियल और फौरन के साथ मैं काम कर रहा था. ठीक है. अभी मेरा इस प्रोजेक्ट, अब मेरी जो मेन ब्रांच है, ये वाली मेन ब्रांच मेरी एकदम अप टू डेट है. लाइक इसके ना सारे कोड वर्किंग है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है. अभी दानियल बोलता है भाई मेरे को तेरी वेबसाइट अच्छी लगी, मुझे तेरा कोड अच्छा लगा है, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा. कंट्रीब्यूट का मतलब क्या कि मतलब दानियल दानियल भाई साहब चाहते हैं कि वो मेरी इस कोड के अंदर कुछ एडिटिंग करे, कुछ नया फीचर डाले. तो अब मैं तो ये चाहूँगा, लाइक कोई भी चाहेगा नहीं कि तुम्हारा एक कोड चल रहा है, एक तुम्हारे वर्किंग कोड के अंदर कोई भी भाई साहब बाहर से आए और बोले कि यार मुझे एडिटिंग करना है. तो तुम लोग ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारा जो वर्किंग ब्रांच है, तुम्हारा वर्किंग कोड है, उसको कोई हाथ लगाए, उसको कोई ख़राब करे. तो गिट यहाँ पे भी काम करता है. गिट बोलता है ठीक है भाई ज़्यादा टेंशन ना लो, आई मैनेज इट. तो गिट क्या बोलता है, गिट बोलता है कि हम लोग एक ब्रांच से, मतलब जो हमारी मेन ब्रांच है, हम लोग इस मेन ब्रांच से भी हम लोग दूसरी ब्रांच बना सकते हैं. लाइक अभी दानियल आया, दानियल बोला भाई साहब मुझे तेरे कोड में कंट्रीब्यूट करना है. मैंने बोला ठीक है कर लो. तो वो क्या करेगा, वो अभी समझो कि ये वाला मेरा कमिट, मेरा अभी का मेन कमिट है, लाइक मेरा करंट कमिट ये है. ठीक है.
तो दानियल भाई साहब क्या करेंगे, दानियल भाई साहब मेरे इस कमिट से अपनी एक अलग ब्रांच बना लेंगे। तो मतलब क्या होगा कि मेरा कोड तो है, मेरा मतलब क्या है, जिसमें समझो कि मेरा कोड चल रहा है, मेरे कोड के ऊपर दानियल भाई साहब मतलब मेरी ब्रांच चल रही है, लाइक मेरी मेन ब्रांच जो है वो एकदम वर्किंग है, सब बढ़िया चल रहा है। मेरी मेन ब्रांच के ऊपर दानियल भाई साहब ने अपनी अलग ब्रांच बना ली है। अब ये बनाए क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी मेन ब्रांच है उसके अंदर कोई भी कोड में आया, कोई भी कोड खराब भी हो, और जो वर्किंग कोड है वो भी चला गया, लाइक ना फीचर आया ना कोड आया, दोनों ही गायब हो गए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दानियल अलग ब्रांच बनाए। तो इस ब्रांच के अंदर दानियल भाई साहब जो भी कमेंट, अब देखो ये भी एक ब्रांच है, लाइक समझो दानियल ब्रांच का नाम दिया वीडियो, ठीक है। अब ये भी एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच में भी दानियल भाई साहब कमिट मारेंगे। तो अभी जो भी कमिट दानियल भाई साहब अपनी ब्रांच में मारेंगे, लाइक जो भी कमिट दानियल भाई साहब अपनी वीडियो वाली ब्रांच में मारेंगे, वो सारे कमिट, वो सारे कोड है ना, याद रखना, वो सारे कोड जो भी इस ब्रांच के अंदर है वो मेरी मेन ब्रांच को घंटा का फर्क देंगे। लाइक वो अलग ही दुनिया में, लाइक ऐसा होगा जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है, लाइक एक सीढ़ी चल रही है तो दानियल भाई साहब अलग पटरी में चले गए, तो ये अलग कमिट है, ये ब्रांच अलग है, इस ब्रांच का कोई भी कोड मेरी मेन ब्रांच को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा वो। अभी क्या होगा कि मेरा वीडियो ब्रांच चल रही है फिर से, हाँ। अभी तो क्या होगा, अभी समझो कि दानियल भाई साहब का पूरा वीडियो का था फीचर सब सही चल रहा है, एकदम बढ़िया हो गया। अभी एक और मैंने भी अपना कमेंट मारता गया, लाइक दानियल, मैं बोला दानियल भाई तुम अपना कमेंट मारते रहो, मैं अपना आगे करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी दानियल क्या चाहता है, दानियल चाहता है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग कोड, लाइक जो मेरे अभी मेरा करंट कमिट ये हो गया, ठीक है, मेरा करंट कमिट ये हो गया। तब दानियल चाहते हैं कि यार जो भी जकी ने अपनी मेन ब्रांच के अंदर है, जो अपनी जो उसकी जो मेन ब्रांच है उसमें उसने जो भी एडिटिंग किया है, दानियल चाहते हैं कि यार वो सारे कोड भी उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तब मैं दानियल भाई साहब क्या करेगा, दानियल भाई साहब मेरी ब्रांच, जो मेरी मेन ब्रांच है, मेरी मेन ब्रांच से दानियल भाई साहब अपनी ब्रांच में कोड लेके, तो कोड लेने को क्या बोलते हैं, कोड लेने को बोलते हैं पुल। तो दानियल भाई साहब क्या करेंगे, वो मेरी ब्रांच से अपनी ब्रांच में जो ये वाला कमिट है, हाँ ये मेरा कमिट है, ये वाला, एक मिनट, थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पे, गंदगी हो गई है, हाँ। तो ये मेरा कमिट, Hello, Zaki. I think there is a network issue from his end. Just wait for a minute. He will join now. सॉरी गाइस, वो ज़रा यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा कनेक्शन लॉस थे, तो उसकी वजह से मैं चला गया था, रियली सॉरी, लेट मी प्रेजेंट इट नाउ। अनिल कैन यू प्लीज टेल मी, मैं लास्ट टाइम कहाँ था बोल पाया था, लाइक Commits. हाँ, Screen share तो कर. सॉरी गाइस, वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था इंटरनेट का। देख लिया, हाँ, लास्ट टाइम मैं कहाँ तक बोल पाया था। वही मेन ब्रांच को कुछ नहीं हो सकता, ऑलरेडी जो कमिट हो रहा है वो वीडियो में हो रहा है. ठीक है, तो वीडियो में कमेंट, मैंने पुल का बताया था, पुल का नहीं. नहीं, ठीक है, तो मतलब ये सब लाइन में बता क्या रखा था। हाँ, नहीं वो नहीं बनेगा. अल्लाह, सारा ये नेट मेरा टट्टी यहाँ पे, क्या टट्टी, सॉरी का ऐसा हो, रियली सॉरी। सो मैं कहा था कि अभी जो भी कोड मेरे इस वीडियो में रहेगा, जो भी कोड दानियल का ब्रांच में रहेगा, वीडियो के ब्रांच में, वो कोड
मेरी मेन ब्रांच को अफेक्ट नहीं करेगा। अभी ऐसा इमेजिन कर लो, मैंने बोला जाना भाई साहब तुम अपना कोड करते जाओ एडिट, मैं अपना आगे करते जाऊँगा। तो अभी इमेजिन करो कि मैंने भी आगे अपने कमिट मारता गया, लाइक मैंने और दो दिन कमिट मारता गया। अभी दानियल बोला कि यार मुझे जो जकी ने जो कोड लिखा है अपनी मेन ब्रांच के अंदर, वो उसको अपनी अपनी ब्रांच में ही चाहिए। लाइक तो क्या होगा कि क्योंकि मेरी ब्रांच मेन ब्रांच है, जो भी काम होगा सब मेरे वाले ब्रांच में होगा, जो मेरे कोड लिखा है उस कोड में होगा। तो दानियल ने क्या चाहेगा कि जो कोड मैं लिखा हूँ वो कोड उसके बाद अप टू डेट रहे, साथ में उसका फीचर भी। तो वो क्या करेगा, वो मेरे इस कमिट को उठा के अपनी वाली ब्रांच में पुल कर लेगा। तो ये आपको याद होगा मैंने कहा था कि रिमोट रिपोजिटरी से, या फिर अगर हम कोई भी मतलब रिमोट रिपोजिटरी से जब हम कोड लेते हैं अपने लोकल में तो उसको पुल बोलते। सिमिलरली when we take the code from the main branch to any other branch, we also call it as pull. Okay, so what Daniel will do, Daniel will pull the code from the main branch to his video branch, and then he will have another commit that and thus ऐसे क्या होगा कि उसके पास सारे कोड मेरे पास रहेंगे। अभी इमेजिन करो कि कुछ टाइम के बाद दानियल का वीडियो का हो गया, लाइक दानियल ने अपना जो उसका वीडियो का था फीचर उससे पूरे तरीके से बना लिया। अब मैं क्या चाहूँगा, अब मैं ये चाहूँगा ना कि जो दानियल का कोड है वो मेरे कोड में आ जाए। तो अब इस केस के अंदर हम इसको पुल नहीं बोलेंगे। मैं क्या करूँगा, मुझे दानियल की ब्रांच है ना, दानियल की ब्रांच है, इस ब्रांच को मैं अपने अंदर ले लूँगा। तो मैं दानियल के ब्रांच अपने अंदर ले लूँगा। तो ब्रांच को लेना मतलब ब्रांच को मर्ज बोल देते हो, ठीक है। तो ब्रांच को एक साथ क्लब करने को बोलते हैं क्या, मर्जिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं दानियल की ब्रांच वीडियो ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज करूँगा। तो उससे क्या होगा कि अब जो जो भी कोड दानियल की ब्रांच में रहेगा वही सेम कोड मेरी मेन ब्रांच में भी रहेगा। और इसकी ब्रांच जो रहेगी वो इस पॉइंट के बाद उसकी ब्रांच चली जाएगी, ठीक है। तो जहाँ से ब्रांच बनती है, जहाँ से ब्रांच दानियल ने बनाया था उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच ऑफ, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ, ठीक है। और जहाँ पे उसकी ब्रांच खत्म हो गई, जहाँ पे उसकी ब्रांच मैंने ले लिया, तो उसको बोलते हैं क्या, मर्जिंग ऑफ ब्रांच। तो अभी क्या होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मेरा कमिट ये हो गया, ठीक है। अभी मेरा कमिट कमिट ये है मेरा, ठीक है। ये नहीं है मेरा कमिट, अभी मेरा कमिट ये। तो इस पॉइंट के बाद से क्या होगा, जो भी कोड दानियल के ब्रांच में रहेगा वो सेम कोड मेरे ब्रांच में भी रहेंगे, ठीक है। सो अभी आप कोई भी ऐसा अमेजोन ले लो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ले लो, अगर आप उनके कोड देखोगे ना तो उनके कोड में आपको इतनी सारी ब्रांच दिखेगी, इतनी सारी ब्रांच, लाइक ऐसा लगे कि साला पूरा पूरा कोई झाड़ आ गया, लाइक पूरे ऐसे ट्री की रूट कैसे होती है ना, वैसे ही पूरा उन लोग का रहता है ब्रांचेस। और एक बार बताना भूल गया, गिट के अंदर, लाइक गिट और गिट या फिर वर्जन कंट्रोल के अंदर आप एक ब्रांच के अंदर भी एक और ब्रांच आ सकता है। लाइक इमेजिन करो फरहान आया, फरहान बोला दानिया मुझे तेरा ये वीडियो कॉलिंग का अच्छा लगा, मैं चाहूँगा कि लोग वीडियो कॉलिंग के साथ टेक्स्ट भी करें। तो अब सेम जैसा मेरा केस था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो वर्किंग कोड है उसके है ना दानियल कुछ कानगिरी करे। सिमिलरली दानियल भी नहीं चाहेगा कि जो उसका कोड है उसके अंदर कोई बाहर से बंदा आके कानगिरी करे। तो फिर फरहान क्या करेगा, फरहान जो है फरहान जो है दानियल की ब्रांच के ऊपर अपनी ब्रांच बनाएगा। इसको क्या बोले, इसको बोले इंटर ब्रांच। लाइक ये हो गया टेक्सटिंग का, लाइक इसमें छोटा करने दो थोड़ा। तो ये यहाँ पे ये ब्रांच हो गई दानियल की, फरहान की टेक्स्ट ब्रांच हो गई। ये वाली जो ब्लैक ब्रांच है ये हो गई दानियल की। तो इसका एक के ऊपर एक ब्रांच आ गई। लाइक हम लोग चाहे तो हम ब्रांच के ऊपर ब्रांच, ब्रांच के ऊपर ब्रांच, ब्रांच के ऊपर ब्रांच कर सकते हो, फिर इन ब्रांच को मर्ज कर सकते, मर्ज करके लाते हैं मेन रिपोजिटरी में। तो मतलब क्या, ब्रांच को बनाना बोलते हैं ब्रांच ऑफ, और सारे ब्रांच को एक साथ क्लब करने को बोलते हैं मर्जिंग। सो अगर इन समरी पूरा दूँ तो इन शॉर्ट ऐसा होता है कि जब भी आप एक रिपोजिटरी बनाते हो, लेट इट बी लोकल और रिमोट, उसके अंदर एक रहती है कोर ब्रांच जिसके अंदर सारे कोड वर्किंग रहते हैं, उसको बोलते हैं मेन ब्रांच, या फिर कुछ कुछ लोग उसे बोलते हैं मास्टर ब्रांच। अब इस ब्रांचेस के अंदर जो हमारी मेन ब्रांच है, इसके अंदर आपके सारे कमिट रिकॉर्डेड रहते हैं। आप जो भी कमिट बनाओगे कोई भी एट पॉइंट ऑफ टाइम में, आप कोई भी कमिट करोगे वो सारे कमिट जो रहेंगे वो आपके ब्रांच का रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। और अगर किसी बंदे को आपके साथ कोलैब करना होगा तो वो आपकी ब्रांच के ऊपर अपनी एक अलग ब्रांच बनाएगा जिसको बोलेगा हम लोग क्या, ब्रांच ऑफ। और एट ए टाइम जब उसका ब्रांच बन के हो जाएगा, जो वो फीचर ऐड करेगा, तो जो जो भी फीचर वो ऐड करेगा एक बार वो बन गया तो उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे ब्रांच की मर्जिंग, ठीक है। सो ये था पूरा हमारा कि गिटहब क्या, लाइक कि गिट क्या होता है। गिट तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमें थियरी में ये सीखा कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, रेपोजिटरीज क्या होती है, कमिट क्या होता है, पुश पुल और ब्रांचेस क्या होती है, और मर्जिंग क्या होता है, ठीक है।
सो ये बहुत बड़ा लॉन्ग थ्रेड था। सो अभी बारी है नाउ, इट्स टाइम टू सी द कोड। सो दैट मतलब जो भी हम अभी तक सीखे हैं अभी उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, ठीक है। सो अभी इस टाइम फॉर गिट इंस्टॉल। सो अभी आप है ना डिस्क्रिप्शन का ना देख पाएंगे कहीं पे लिंक है गिट इंस्टॉल करने की। तो आप उस लिंक में जाए और वहाँ पे जाके आप गिट इंस्टॉल करें। तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ गिट इंस्टॉल करने के, जस्ट अ मिनट एट माय, ठीक है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने गिट इंस्टॉल करके रखा था। ना ये यूएसबी सेट कर ले तो मज़ा आ जाए। ठीक है। तो दानियल स्क्रीन दिख रही है मेरी, मेरा फोल्डर दिख रहा है। हाँ। सो अभी आपका एक बार गिट इंस्टॉल हो जाए तो तब आप आगे वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी लेट्स सी, हाँ ये मेरा गिट है, ठीक है। तो अभी आपको एक, जिससे आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट लिख के आएगा, पूछेगा यू गिट फॉर विंडो, तो यस क्लिक करना, लाइक इंस्टॉल करने के लिए यस क्लिक करना, ठीक है। तो लेट्स गिव इट अ टाइम। तो अभी आपको ऐसा एक खुलेगा प्रॉम्प्ट, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। जो भी आइटम बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है उनको बाय डिफ़ॉल्ट ले लेने दो, ठीक है। सो लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पूछेगा कि आपको एडिटर कौन सा चाहिए। सो गो विद विम एडिटर, विम एडिटर थोड़ा अच्छा रहता है, इट्स वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। सो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे वो भी पूछेगा आपका है ना बाय डिफ़ॉल्ट लेट गिट डिसाइड रहेगा चेक, आप उसको हटा के जो नीचे है ओवर एड डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम, तो उस वो सेलेक्ट कीजिए। और जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा मेन उसको ले लीजिएगा, हाथ में लगाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा उसी को रेंज दीजिएगा। यहाँ पे भी सेम जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको रेंज दीजिएगा, सेम सेम, लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक करते जाइए। फिर एट ए टाइम में यहाँ पे ऐसा चेक पॉइंट चेकआउट आएगा, तो सारे चेकआउट्स को आप चेक कीजिएगा, ठीक है। सारे चेकआउट चेक कीजिएगा, फिर उसके बाद इंस्टॉल आएगा। सिंस मेरे पीछे पहले से गिट इंस्टॉल है तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। तो कैंसिल करने दो। चलो यार, ठीक है। सो एक टाइम अभी आपका एक बार गिट इंस्टॉल हो जाए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कोड दिखाने के लिए वी विल इंस्टॉल द वी एस कोड, लाइक हम लोग एक एडिटर डाउनलोड करेंगे। सो आप गूगल में जाके लिखेंगे वी एस कोड डाउनलोड, तो जो सबसे पहला लिंक रहेगा उस पर क्लिक करके, लाइक दिखा देता हूँ, वी एस कोड, यस कोड डाउनलोड। तो जो पहला लिंक रहेगा इस पहले लिंक पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे जो भी आपका ओएस सिस्टम है, अगर आपका मैक है, विंडो है या फिर लिनक्स है, तो उस हिसाब से आप जाके अपना जो रहता है वी एस कोड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा था वी एस कोड फॉर टाइम सेविंग, ठीक है। सो मैं अपना यहाँ वी एस कोड खोलूँगा। हाँ, मेरा वी एस कोड ऑन हो गया, ठीक है। सो अभी मैं अपने वी एस कोड में हूँ। तो हमारा वी एस कोड का स्टार्टिंग का पेज ऐसा रहेगा। यहाँ स्टार्टिंग में आपका कुछ पूरा खाली रहेगा, आपको बस स्टार्टिंग के एक दो तीन चार रहेंगे, ठीक है। सो आप बाद में जाके यूट्यूब में देख सकते हैं कि वी एस कोड, क्योंकि वो तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस आएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं भी जाके ओपन फोल्डर में क्लिक करूँगा। ओपन फोल्डर में जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में, यहाँ पे अपना एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, फिर नया फोल्डर बनाया न्यू। अभी न्यू में क्लिक करता हूँ फोल्डर पे और लेट्स गिव इट अ नेम गिट सेशन, ठीक है, क्योंकि सेशन लेट गिट सेशन देना ज़्यादा ईजी रहेगा, गिट सेशन, ठीक है। और मैं अभी इसको सेलेक्ट फोल्डर करूँगा। जैसे ही आपका एक बार गिट इंस्टॉल हो जाता है ना, अगर आप मैक में है, लाइक अगर आप विंडो में है तो आप अपना सी एम डी खोलिए।
सेम कैसे खोलते, स्टार्ट पे क्लिक करने का, स्टार्ट में क्लिक करके यहाँ पे टाइप करें कमांड कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये ऐसा यहाँ पे खुलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप टर्मिनल पे, अगर अब लिनक्स में है तो आपका टर्मिनल रहेगा, और मैक का मुझे इतना आइडिया नहीं है, सॉरी, क्योंकि मैंने मैक का भी यूज़ किया ही नहीं है। ठीक है, तो आपका एक बार जब कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, लाइक एक बार आपका गिट इंस्टॉल हो गया, तो चेक करने के लिए कि क्या आपका गिट मतलब पूरा सही से इंस्टॉल हुआ है, उसका कमांड है गिट डैश डैश वर्जन। ठीक है, इसे गिट डैश, अरे यार मालूम है मुझे ऐसे होगा, क्या ना, क्या ना, ये ना खा रहता, गलती से मैं आ गया इसमें। विंडो हार, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे सारा इशू हो गया हमारे यहाँ से। तो मेरा भी अभी गिट डाउनलोड है वापस से, वो गलती से मैं इंस्टॉल में क्लिक कर दिया था, तो सब मेरा जो गिट था पेज इंस्टॉल वो उड़ गया। सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू, वो हो जाता है कभी कभार। तब तक आप लोग भी जाके गिट और वीएस कोड है ना डाउनलोड करिए, ताकि आप लोग भी मेरे साथ जो हैंड्स और वर्कशॉप कर पाएंगे इसको। गिट इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग का भी आई गेस हो ही रहा होगा, अगर आप लोग मेरे साथ चल रहे होगे। Zaki, there is a question in the chat box हम्म, by Sheikh Fakhruddin. It says difference between Git and GitHub. Okay, so the basic difference Git and GitHub is that Git is some kind of like the both Git and GitHub, they both work on the version control. Just the difference is that the Git with आप Git को यूज़ करते हो कमांड प्रॉम्प्ट से, और GitHub का पहले से खुद का उनका फ्रंट एंड, लाइक आप जाके ऊपर लिखोगे github.com, तो github.com पहले से वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने सारे कोड डालते हो। और गिट क्या है, गिट इट्स अ कमांड, लाइक इट इज़ अ CLI। ठीक है, वो कमांड बेस्ड वो एक है कोड। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, दोनों गिट और गिटअप दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि गिट बैक एंड है और गिट फ्रंट एंड है। ठीक है, दे बोथ वर्क ऑन वर्जन कंट्रोल, ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों दोनों वर्जन कंट्रोल पे काम करते हैं। बस ये फ़र्क है कि आप गिट को यूज़ करते हो कमांड रूम से, और गिटअप की खुद की वेबसाइट है उन लोग की। और ऐसे बहुत सारे वर्चुअल कंट्रोल टूल है, लाइक बिग बकेट है, फिर बहुत सारे, लेकिन गिट और गिटहब सबसे ज़्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि ये दोनों सबसे पुराने वर्जन टूल है, आई गेस, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, दोनों सबसे पुराने वर्जन टूल है, और लोग सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। लाइक इनके जितने भी कमांड्स है, वो जो जो काम है इनका, वो इनके कमांड्स ही है। तो अभी एक बार हमारा गिट इंस्टॉल हो जाएगा, तो हम बताते हैं कि गिट के साथ आप कैसे रिपोजिटरी बना सकते हो वो सब। सो आई थिंक डाउट शायद आपका क्लियर हो गया होगा शेख फरुद्दीन। सॉरी इफ आई स्पेल योर नेम रॉन्ग।
अभी तक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जिनके पास भी गिट इंस्टॉल है, वो कमेंट में यस 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 स्पैम करे। और जिन्होंने अभी तक गिट इंस्टॉल नहीं किया है, वो जाके पहले जाके इंस्टॉल करे, उसके बाद आके यस। इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे कितने व्यूवर्स हमारे साथ ऑन हैंड वर्कशॉप कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हमारा सेशन चलता ही रहेगा, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो आप साथ में करते रहेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आता। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे गेट इंस्टॉल होने ही जा रहा है, लाइक या हो गया या शेयर। सो ड्रैगन वॉरियर 01 सेइंग दैट सर एक बार फिर से बता दो गिफ्ट ने गिट इंस्टॉलेशन। सो गिट इंस्टॉलेशन बहुत इजी प्रोसेस है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा गिट डाउनलोड की वेबसाइट का। यू हैव टू गो ऑन टू दैट वेबसाइट and they will have like 3 links, one for Windows, one for Mac, and one for Linux. So choose the operating system, and it will then download the specific file. Let's say for Windows we have git some version.exe. So in after that download, just double click on that and just go through the process. This is a live stream, you can rewind and you can see all the process what Zaki has shown, and you can go through the same process and install your git easily. ओके, सो थैंक यू दानियल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा गेट इंस्टॉल हो गया, तो मैं फिनिश करूँगा और मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट को वापस से कोडिफाई करता हूँ। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। सिंस मैं विंडो यूज़र हूँ तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा। अगर आप लिनक्स यूज़र रहेगा तो आपको टर्मिनल रहेगा। विंडोज मैक यूजर्स का भी आई गेस टर्मिनल ही रहता है। ठीक है, तो अभी अगर आपको चेक करना है कि डू यू हैव दैट गेट इज इंस्टॉल सक्सेसफुली इन योर पीसी, सो व्हाट डू जस्ट डू, जस्ट टाइप द कमांड गेट डैश डैश वर्जन, डबल डैश वर्जन नॉट ट्रिपल डैश, गेट वर्जन। सो यहाँ पे बताएगा कि आपका वर्जन कौन सा है। मैंने 2.29 इंस्टॉल किया था, सो मैंने यहाँ पे दिखा रहा है गेट वर्जन 2.292 पॉइंट विंडो डॉट टू। अगर आप लिनक्स देखें तो आपको यहाँ पे लिनक्स डॉट 18, लिनक्स का 20, और मैक वालों को तो सॉरी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, सो अभी हम क्या कहते हैं, अभी हमारा गिट भी इंस्टॉल हो गया है, हमारा वी एस कोड भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैंने एक नया फोल्डर भी बना लिया था वी एस कोड के अंदर। अगर अगर आप लोगों को वी एस कोड के अंदर का कोई तकलीफ हो रही होगी तो कुछ नहीं है उसका, जो अगर अगर आपका एंटीवायरस ऑन होगा वी एस कोड के इंस्टॉलेशन टाइम, तो अपना एंटीवायरस को थोड़े टाइम पहले डीएक्टिवेट कीजिएगा, फिर उसके बाद आपका वी एस कोड सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। और वी एस कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। ओके, और सेम अगर ड्राइविंग वॉइस अगर आपको भी तकलीफ हो रही है इसके गिट डाउनलोड करने में भी, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आया होगा ना गिट के अंदर, उसी में नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। ठीक है, सो अभी यहाँ अभी अला हम लोग हमारे वी एस कोड में है। तो अभी मैं क्या करूँगा टू जस्ट टेल यू हाउ द गिट वर्क्स। ठीक है, तो अभी मैं एक नॉर्मल सा, लाइक मैं बस कुछ ज़्यादा प्रोग्रामिंग करके नहीं बैठूंगा, मैं नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। लेट मी कॉल इट एज फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके, सो मैंने एक नॉर्मल सा नोट पैड कैसे बनाते हैं ना हम लोग, नोट पैड का एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी रहता है, तो सेम मैंने यहाँ बना रहा हूँ अपने वी एस कोड में फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अभी फाइल डॉट टी एक्स टी बनाया, और अभी मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ कि हेलो हेलो मोटो, हेलो मोटो आई एम डेवलपर एंड लाभ। ठीक है, सो अभी ऐसे इमेजिन कर लो कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, सो now if I want to tell git to keep the track of code in this folder, okay, so if I want to tell the git to keep the track of the code in this folder, I will just use a command called git init. ठीक है, सो उसके लिए लेट्स फर्स्ट गो इन माय डेस्कटॉप cd to go in my cd desktop slash git session। सो आप अगर तो आप अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट से जो भी फोल्डर के अंदर आपने जो भी फोल्डर आप चाहते हैं कि गेट इनिशियलाइज करे, सो उसका कमांड क्या है, सी डी डेस्कटॉप। अगर आपने डेस्कटॉप बनाया होगा सी डी डेस्कटॉप, फिर स्लैश और फिर गिट सेशन। और लिनक्स यूजर होगा तो उनका कमांड मालूम होगा कि एक सी डी में याद रखेगा सी डी, फिर तो अगर आपका होगा तो आप लोगों को शायद ऐसा होता है कि सी डी डेस्कटॉप
फिर बैकस्लैश, फिर गेट, या फिर जो भी आप नाम दे रहे हो वो, ठीक है। सो मैं सिंस मैं विंडोज यूज़र हूँ, मैं करूँगा CD डेस्कटॉप गेट सेशन, ठीक है। तो अभी मैं अपने डेस्कटॉप के फोल्डर के ना आ गया हूँ। नाउ आई वांट टू टेल गिट कि भाई साहब ये मेरा फोल्डर है, ये मेरा कोड है, कीप द ट्रैक ऑफ इट। सो व्हाट द कमांड इज गेट init. Okay, git init. Let me just increase the font size so that you guys can see. Property buffer size. Let me make it more big. Font size. Font करता हूँ मैं क्या 28. इससे ज़्यादा ही बड़ा हो गया. Can you tell me that अभी दिख रहा font के नहीं? Yes, it's proper. Okay. See. So to tell Git to keep the track of this folder, the command is git init. Okay. Once git init, so now the git has created a empty repository that is in the this path. Okay, this is my path where my local repository has been created. So with git init, you can so what git init is? Git init is nothing but it does two work. First of all, it tells git to keep the track of this code, and second, it create a local repository. Okay, so now our local repository has been created. Like now we have an empty container. So now what we want to put our code inside the local repository. Okay, so it's not like we are putting the local repository remote repository. We are adding the code from our like we are adding the code into our container. ठीक है, like container भी यहाँ है, कोड भी यहाँ है, बस तुम्हें अंदर ऐड करने का. So हम क्या कर रहे हैं, हम इस कोड को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं. तो कमांड भी सेम है. कमांड क्या है? गेट ऐड और फुल स्टॉप, लाइक गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट. और डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब यह है कि जो कुछ भी है भाई साहब सब तुम ऐड कर दो, ठीक है. सो गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, ठीक है. ऐसे एंटर दबाऊंगा तो कोई आउटपुट नहीं आया, मतलब मेरा जो था फाइल वो सक्सेसफुली मेरे कंटेनर के अंदर ऐड हो गया. अभी मैंने आपको कहा था कि गिट क्या करता है, गिट सारे हमारे कमिट का ट्रैक रखता है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग कमिट बनाएंगे. तो कमिट कैसा बनाते हैं? कमिट बनाने का है गेट कमिट डैश एम और फिर डबल कोट. अब एंटर मत दबाना, एंटर मत दबाना, रुको, एंटर मत दबाना. इस डबल कोट के ना हम एक मैसेज लिखते हैं. और मैसेज क्या होता है? सो यूजुअली वी प्रोग्रामर वी केप आवर कमिट मैसेज मोर प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्ड, लाइक whatever thing we have done in our code, like whatever thing we have done till now, we just add we just summarize it in a one sentence and we add it. Like for example, if I have created any event page and I so जब मैं उसे commit करूँगा तो मैं क्या करूँगा, then I will add git commit dash m event page added, means that I have added the event page at this commit. So and usually we developer we just tell our first commit has the initial commit. So this is our first commit, like you are going to commit for the first time. So what we will tell git commit dash m, and inside double quotes we will write initial commit. Okay, so it is a standard way to tell your first commit has the initial commit. Okay, so initial commit. So what is the code? Git commit dash m initial commit and then enter. So once it has been entered, you can see that git has git ने हमें बोला है कि देख भाई एक फाइल चेंज हुआ है और 3 इंसर्शन हुआ है. 3 इंसर्शन मीन्स दैट वी हैव एडेड द 3 लाइन्स. ओके, सो नाउ our now we have created a local repository, we have added our code, and we have also we have added a code in the local repository, and also we have committed the code. So अभी मैं आप लोग को आपको याद होगा जब ब्रांचेस कराया मैंने बोला था कि हर एक रिपोजिटरी के साथ एक कोर ब्रांच बन के आती है. So how to check the branch? The command is git branch. Okay, so this command is not mandatory. If you want, then you can enter it. If you don't want, you don't type it. So git branch. So git branch will tell me that which all repository are there in my which all branches are there in my repository, and which branch is active branch, like on which branch am I right now. So active meaning क्या, कौन से ब्रांच में हम लोग अभी है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ब्रांच. तो अभी यहाँ पे क्या है, गिट ब्रांच. तो यहाँ पे देखिए कि मेरे मेन के अंदर ग्रीन ग्रीन लाइन आया. ग्रीन की लाइन मतलब क्या है, बोल रहे भाई साहब देख तुम लोग मेन ब्रांच के अंदर हो, ठीक है. सो अभी मैं आपको याद दे तो मैं आपको अपना खोलता हूँ वन नोट. सो याद है मैं आपको कहा था कि हर एक ब्रांच के अंदर जो कमिट होता है
वो हमारी मेन ब्रांच को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी एक ब्रांच है, मेन ब्रांच, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको दिखाने के लिए कि एक ब्रांच का जो कोड रहता है वो एक ब्रांच का कमिट दूसरे ब्रांच के कमिट को अफेक्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक अलग ब्रांच बनाएंगे। तो ब्रांच कैसे बनाते हैं, तो ब्रांच बनाने का कमांड है गेट। इसका कमांड है ना थोड़ा अलग है, लाइक जो उसका काम है वो उसका नाम नहीं है, इसका नाम अलग है। इसको बोलते हैं क्या, जैसे ऐड, एडिंग का था तो हमने ऐड किया, कमिट का हो तो हमने कमिट किया। लेकिन अगर आपको एक अलग ब्रांच बनाने का है तो उसका कमांड है गेट स्पेस चेकआउट, हाँ CHECKOUT, चेकआउट, चेकआउट, फिर डैश बी, और जो भी आपका ब्रांच का नाम है वो। तो लाइक अभी मैं एक अलग ब्रांच बना रहा हूँ, लेट मी गिव इट अ नेम सेकंड। तो अभी मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ सेकंड, तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेकंड, नो कोर्स नथिंग गेट चेकआउट डैश बी सेकंड, ठीक है। सेकंड से क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जो कमांड है ये मेरे लिए एक अलग से ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो जिससे मैं कमांड एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख के आया स्विच टू न्यू ब्रांच सेकंड। मतलब क्या कि अभी आप मेन से हटके आप आ गए सेकंड में। जैसे मैं बाहर दूंगा गेट ब्रांच वापस से, गेट ब्रांच, तो यहाँ पे देखेगी कि हाँ कि यहाँ पे मेन आया है और सेकंड आया, और इस टाइम मेरा ग्रीन ग्रीन कर्सर मेन पे नहीं है, सेकंड। मतलब क्या कि अभी मैं एक्टिव किस पे हूँ, मैं अभी एक्टिव सेकंड ब्रांच में हूँ। लाइक अभी क्या है कि जैसा कि आप एक पटरी से हट के दूसरे पटरी पे आ गए हो, अभी आपको अगर वापस से मेन वाली पटरी पे आने का, इफ़ यू वांट टू कम बैक टू मेन ब्रांच, सो कमांड सेम है, कमांड है गिट चेकआउट, लेकिन इसमें डैश भी वेश भी कुछ नहीं है। इस सिंपली गिट चेकआउट, फिर कौन सी ब्रांच पे जाना है, लाइक मुझे जाना है मेन ब्रांच का, तो आएगा मेन, ठीक है। तो मैं ऑफिस से आगे लिख के आया स्विच ब्रांच, स्विच टू ब्रांच मेन। अभी मुझे ऑफिस सेकंड में आने का है, तो मैं आ गया सेकंड, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को दिखाना है कि ब्रांच, दूसरी ब्रांच जो दूसरी होती है रूट ब्रांच, जो सॉरी जो क्या बोलते हैं, जो नोड ब्रांच रहती है, नोड ब्रांचेस का कमिट हमारे मेन ब्रांच में अफेक्ट नहीं करता। तो क्या करूँगा मैं, गिट चेकआउट सेकंड, ठीक है। तो मैं वापस से आ गया अपने सेकंड वाले ब्रांच में, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से अपना वीएस कोड खोलता हूँ, और इस टाइम लेट मी ऐड समथिंग मोर, लाइक आई लव पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके भी हम अब हमारे जाएंगे चैनल में, तो वहाँ पे हमने सेशन लिया पहले पाइथन के ऊपर। तो आई लव पाइथन, आई एम आई एम वेब डेवलपर लीड, वेब डेवलपर लीड, ठीक है। एंड एडमिन समथिंग मोर, और कुछ ऐड करने दो। हाँ, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ चेंजेस अपने फाइल और टेक्स्ट में किया। तो अभी वापस से क्या क्या रूल है, जब भी आप कोई चेंज करते हैं तो आपका जो कोड है वो बाहर रहता है, लाइक ये आपका कंटेनर है, ये आपकी कोड बाहर है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सबसे पहले ऐड करते हो, फिर कंप्लीट करते हो। और इस टाइम गेट इनिट बंद मारना, गेट इनिट आप बस लाइफ लॉन्ग एक ही बार मारते हो, लाइक whenever you are going to do first commit, so before first commit we just use git init, and after that we never use git init anytime, okay. So now what I will do, I will come back to my command terminal, and this time instead of git init I will just do git add and dot, telling that I want to add everything inside my local repository, git add dot, and now I will just do a commit, okay, commit. So git commit dash m, and I will let's give it a commit message that this is my second commit. Okay, this is my second commit. Yeah, this is sound more unprofessional, but our text file is also not any kind of, it's not a professional any kind of text. It's my local repository. I can do whatever I want. Okay, so git second commit, and yeah, enter. So अभी मैंने क्या किया, मैंने जो हमारी सेकंड ब्रांच थी, जो हमारी ये वाली ब्रांच है, लाइक आओ दिखाता हूँ, लेट मी कम डाउन। तो मैंने अभी क्या किया, ये मेरी मेन ब्रांच, ये यार लेट मी कॉपी ब्लू पेन। सो ये मेरी मेन ब्रांच थी, हाँ ये मेरी मेन ब्रांच थी, हाँ। सो अभी मेरा ये यहाँ पे था फर्स्ट कमिट, ठीक है, जो मेरा इनिशियल कमिट था। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी इनिशियल कमिट से मैंने एक अलग ब्रांच बना लिया था, इसका मैंने नाम दिया था सेकंड, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सेकंड ब्रांच, अब मैंने क्या किया, मैंने अभी सेकंड ब्रांच में, मैंने मेन ब्रांच नहीं, जो मैंने मारा था सेकंड कमिट, जो अभी कमिट दिख रही है गेट कमिट डैश एम सेकंड कमिट, ये जो है ये मेरे सेकंड ब्रांच के अंदर आया है। और इसका सबूत क्या, सबूत ये है कि यहाँ पे जो लिख के रखा है यहाँ पे सेकंड, ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिख के रखा था, और यहाँ पे लिखा था मेन, ठीक है। देखो रूट मेन रूट कमिट, तो जो आपको जो आता है आप उससे पढ़ेंगे तो ये बता दे कि ये वाला कमिट आपने मारा है मेन ब्रांच के अंदर, और ये वाला कमिट आपने मारा है सेकंड ब्रांच के अंदर, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, मैंने मैंने फर्स्ट इनिशियल कमिट से मैंने अपनी ब्रांच ऑफ खोल लिया था, सेकंड ब्रांच बनाया था।
अभी मैंने क्या किया, मैंने अपना सेकंड कमिट मारा है, वो मारा है अपने इसके अंदर, ठीक है। तो मेरा सेकंड कमिट यहाँ पर, तो ये मेरा है सेकंड सेकंड कमिट, ठीक है, सेकंड जो भी है सेकंड कमिट, ठीक है। अभी अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या जादू इसका। तो मैंने क्या बोला था, ये जो सेकंड कमिट है ये मेरे मेन ब्रांच से कुछ घंटा फर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कैसे कैसे दिखाता हूँ मैं। तो लेट मी ओपन माई वी एस कोड, क्योंकि वी एस कोड और गिट दोनों आपस साथ में काम करते हैं, ठीक है। लाइक जो ये वी एस कोड एडिटर ही ऐसा है कि आप कोई भी टूल इंस्टॉल कर लोगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ में मिलकर काम करेगा। लाइक ये कैसा, ये बंदा वी एस कोड है ना, हाथ बढ़ा के रहेगा, बोला आओ मेरा हाथ बढ़ाओ मेरे साथ काम कर लो, ठीक है। सो अभी मैं हूँ अपने किसके अंदर, मैं हूँ अपने सेकंड ब्रांच के अंदर। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं होऊंगा शिफ्ट अपने मेन ब्रांच के अंदर। सो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी मेन ब्रांच के अंदर शिफ्ट होऊंगा, ये जो नीचे का जो लाइन नंबर 5 से जो कोड है, लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 15 ना, लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 50 का जितना भी कोड है सब ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। देखिए गेट चेक आउट, फिर क्या था मैं है ना मेन, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाया, कोड चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ब्रांच चेंज किया। वो जो लाइन नंबर जो लाइन नंबर 15 का कोड था वो इस ब्रांच का ना था, वो मेरा लाइन नंबर कोड इस ब्रांच का ना था, वो मेन ब्रांच में नहीं था। तो अभी सिंस मेन ब्रांच का ना क्या, मेन ब्रांच का बस ये स्टार्टिंग के चार लाइन है, और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले के अंदर पूरे 15 लाइन है, ठीक है। सो ये है हमारा मैजिक गिट का। जो गिट का करे सारा काम गिट कर रहा है, गिट गिट देखेगा ठीक है भाई, मेन ब्रांच के अंदर ये है, सेकेंड ब्रांच के अंदर ये है, जैसे बंदा शिफ्ट होता है उसको उस ब्रांच का कोड बताओ, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे वी एस कोड में देखिए नीचे लिखा है, यहाँ पे मेन लिखा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अभी इसके अंदर एक नया फाइल बनाता हूँ। Hello, Zaki. I think he got disconnected again. Let me just. पढ़ाते पढ़ाते नेट जाता पूरा फ्लो। Guys, please wait for a minute. He will be joining soon. He Hear may me? come again. Fuck my net. Really? Fuck my net. It sucks. Really sucks. Control. सॉरी मेरे टाइम ऑन यूट्यूब में भूल गया था। Control. ये तो दानिया कहाँ तक लाते हमने किया था यार। Really suck man. Sorry guys on YouTube, I'm really sorry. मेरा नेट टट्टी है, I can't help it, like I can't help it. Really sorry, I'm really sorry. ठीक है। मैंने कहाँ था लास्ट टाइम, मैंने क्या बताया था, कोई आइडिया? मेन पे चेकआउट किया था। वो मैजिक नहीं हुआ था। तो ये सब मैंने नहीं मारा था, ये गिट एड गिट कमिट सब नहीं मारा था मैंने। फिर नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी सॉरी। तो मैं कहाँ था, मैं था यहाँ पे। मैंने वो सब एक्सप्लेन नहीं किया था कि जब ब्रांच चेंज होती है तो कोड नहीं आता, ऐड लाइक गिट सब संभालता है। नहीं, वो बता दिया था कि वीएस कोड और गिट
तो ये आपस मैंने में काम कर लेते हैं, ये बताया था। जैसे नहीं ओह फक, इतना देर से नहीं था मैं। नहीं नहीं, ये हो गया। मुझे डरा, मेरे को लगा मैं इतने देर से आउट हो गया था। ठीक है, वहीं सॉरी पे था तू, गाइस। VS कोड पे ही था। तो मतलब ये सब फाइल मैंने ऐड नहीं किया था। हाँ तो हाँ, ये तूने फाइल तो ऐड कर रहा। ए, हाँ। सो गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लिटरली सॉरी। तो हाँ, तो हम कहा थे, मैंने कहा था कि जो भी, हाँ, जो भी सेकंड ब्रांच का कोड है वो सारे कोड जो है अपनी मेन ब्रांच को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। गिट जो है, गिट दोनों को अलग अलग ही रखेगा, लाइक दोनों को अपने अपने समान ही रखेगा। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग अभी हम लोग फिलहाल सेकंड ब्रांच के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड ब्रांच के अंदर है, हमारा जो वी कोड है वो भी सेकंड ब्रांच के कोड दिखा रहा है। अभी जैसे ही मैं मेन ब्रांच में शिफ्ट स्विच मारूंगा, जैसे मैं ना मेन ब्रांच के अंदर स्विच मारूंगा, जो भी मेरे कोड है अपने आप चेंज होने वाला है। गेट चेकआउट में, तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, आप देखिए मैं पीछे स्क्रीन के अंदर जो फाइल्स, जो भी मैंने कोड, लाइक जो भी मैं नंबर्स ऑफलाइन मैंने सेकंड के अंदर लिखा था वो मेन में नहीं है, तो क्या होगा, सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं मेन ब्रांच के अंदर क्या है, मैंने मेन ब्रांच के अंदर मैंने जब मेरा ये 30 मिनट चला गया था, तो मैंने उसके अंदर ही मैंने एक फाइल टू डॉट टेक्स्ट से बताया आपको, बताने के लिए कि दोनों ब्रांच का जो है कोड अलग रहता है। सो अभी देखिए कि हमारी मेन ब्रांच के अंदर फाइल 1 के अंदर बस 4 लाइन है और फाइल 2 के अंदर बस 1 लाइन है। ठीक है, सो अभी जब भी हम लोग यहाँ से हम शफल मारेंगे, तो जैसे देखो मैं वापस से जब सेकंड में जाऊँगा तो वापस से वो फाइल टू डॉट टी हट जाएगी, और फाइल डॉट टी के जो मैंने लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 15 तक जो भी कोड थे वो सब आ जाएंगे। सो ये है मैजिक गिट का। ठीक है, सो लाइक गिट क्या है, गिट सब कुछ अपने आप ही संभाल लेता है। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया कि हम लोग लोकल रिपोजिटरी कैसे इनिशियलाइज करते हैं, लाइक गिट इनिट देख लिया हमने। फिर हमने ये देख लिया कि आप कोड को ऐड कैसे करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि आप कमिट कैसे करते हैं। फिर हमने ब्रांचेस के बारे में एक बार और पढ़ लिया कि ब्रांचेस क्या होता है। फिर हमने ये भी सीखा कि आप ब्रांच बनाते कैसे और ब्रांच में स्विचिंग कैसे करते हो। अब एक चीज़ का बाकी है, एक चीज़ बाकी है कि हम लोग, आपको कहा याद है मैंने कहा था कि जब हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब हमारा कोड एक फीचर है, इमेजिन कर लो कि जो सेकंड ब्रांच मैंने बनाया था ये मेरा एक फीचर था। ठीक है, ये मेरा एक फीचर था। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी मेरा ये फीचर कम्प्लीट हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वो सेकंड ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर दूंगा। तो क्या होगा, मतलब ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच इस पॉइंट ऑफ व्यू से आके यहाँ डायरेक्ट इसके अंदर क्लब हो जाएगी। ठीक है, सो अभी क्या, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड कमिट था जो मैंने अपने नेट के जाने के थ्रू मैंने बना लिया था, मैं इतना एक्सप्लेन किया था सब। ठीक है, सो ये मेरा थर्ड कमिट है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपने सेकंड ब्रांच को मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर लूँगा। क्या, अपनी मेन ब्रांच, सेकंड ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले, मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी मेन ब्रांच के अंदर जाऊँगा। ठीक है, अपनी मेन ब्रांच के अंदर मैं आया। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखा है स्विच टू मेन ब्रांच। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड ब्रांच को अपना मर्ज करना है। तो क्या कमांड है, कमांड एकदम सिंपल है। क्या करना है, हमें मर्जिंग करना है। तो कमांड क्या होगा, मर्ज। तो क्या कमांड है, गेट मर्ज। कौन सी कमांड, कौन सी ब्रांच में मर्ज करना है, सेकंड, तो गेट मर्ज सेकंड। ठीक है, ये जैसे मैं ऐड करूँगा ना, गेट मर्ज सेकंड, तो अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आया, हाँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आया क्योंकि मेरे जो मेन ब्रांच है, जो मेरी वाली मेन ब्रांच है, इसके अंदर 2 फाइल्स है और मेरे सेकंड ब्रांच के अंदर बस एक ही फाइल था। ठीक है, तो इसलिए गिट ब्रांच आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सेकंड में वापस से जाएंगे। ठीक है, फाइल्स नी यूनिट रिसोर्स, हाँ। सो या, तो इशू सॉल्व कैसे करने का, ये हेड है। ठीक है, इनकमिंग इशू है। ठीक है, एक्सेप्ट करंट चेंज। ठीक है, हाँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी गिट चेकआउट जाता हूँ, मैं सेकंड मंथ वापस से। ठीक है, तो मैंने सिंस मैंने मर्ज कर दिया उसको, अब वो चला गया है कैसे यार। मर्ज करने के बाद एक रिपोजिटरी गायब हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वापस से हम एक नया रिपोजिटरी बनाते हैं। लेट्स मेक अ रिपोजिटरी गेट मेन, हम लोग इसको ब्रांच का नाम देते हैं, हम लोग क्या थर्ड देते, चलो थर्ड देते नाम, आसान रहेगा मेरे लिए। थर्ड दिया हम लोग ने, हम लोग स्विच हो गए थर्ड पे। और अभी यहाँ पे हम लोग थर्ड का हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पे आए, तो थर्ड पे हो गए। अभी थर्ड का नाम वही करेगा, क्या, गेट ऐड, फिर कमिट डैश एम,
inside third branch, inside third branch, ठीक है, git merge मारा, अभी मेरा हो गया इंसर्शन, मेरा मैंने अपनी तीसरी वाली ब्रांच माया, ठीक है, क्योंकि मर्ज करने के बाद जो सेकंड ब्रांच गायब हो गई, ठीक है, तो मैंने थर्ड ब्रांच माया, तो मैं क्या करूँगा, मैं थर्ड ब्रांच के मैं वापस से चेकआउट मारूंगा अपनी मेन ब्रांच के अंदर, ठीक है, मैं चेकआउट मारूंगा अपनी मेन ब्रांच के अंदर, स्विच मारा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे मेन ब्रांच को और थर्ड ब्रांच हाथ में मर्ज करना है, तो कमांड पे गिट मर्ज, आएगा, चल जा क्रॉस फिंगर्स, चल गया, तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिख के आया, फास्ट फॉरवर्ड वन फाइल चेंजेस टू इंसर्शन वन डिलीशन, तो मतलब आप देख सकते हैं कि गिट हमें सब बता रहे कि व्हाट थिंग्स हैज बीन एडेड, which all lines are has been inserted and what has been deleted, okay, so this is what is the magic of the git, ठीक है, so now अभी तक हमने क्या सीखा, we have learned up till now that how to initialize a repository, how to add, how to commit, how to make a branch, how to switch between a branch, how to merge a branch. Abhi, now we have some more code in our GitHub, that if you want to, like, imagine I have taken the code from Daniyal repository, okay, and now I want to see that what all commits has Daniyal made. So what's the command for to check what all the commit has been made? It the command git log, okay, so git log will tell me all the commit that has been made in my local repository or in any repository, okay, so once I have added git log, so you can see here it has told me that inside the third branch, and if I keep on putting enter, then it will then say my initial branch and end, and now to come out of the git log, just press enter q and you will come out of the git log, okay, so this is one command called git log that will tell you all the commits that you has been made in your repository, okay, so now another command is called git status. So what git status does, am I alive, Daniel? Can you just tell me, please? Yes. Yeah, I can't believe my net right now, okay, so there is another command called git status. So what git status will tell, git status will tell you which all file you have, which all file are there yet to be committed, okay, so like for example, if I added something more inside my repository, okay, so I have something added more, and then after 3 months I came back and I opened this project again, so now I don't know that which all commands or which all lines of code are yet to be made commit, all lines of code are not committed yet, so the command is git status, okay, so git status will tell me that which all file are yet, which file has been modified, which file has been added, so I have modified my file.txt, so it has told me that ki file modify file.txt, no changes added to commit, use git add or git commit dash a, okay, so just don't go with this command, it's a really tough command, so go, okay, then git add, so now we have, no, it's given me an error, git space add, okay, it's not git add and dot, it is git add git space add space dot, okay, so git add space dot, and now again if I just put git status, okay, now if again I put git status, so it now the red color, the first this modify file txt was in red color, now it is in green color, telling me that you have added the repository in your local, that you have added the code inside the repository already. Now one, you're just one step away to commit your file, so once I will do the commit, so let's make it a commit dash m status commit, okay, this like it makes it status commit, and now if I, so again the git told me that भाई साहब तुमने main में add किया है, एक file change हुई है, there has been file insertion and one deletion, so now if I command the git status again, if I put the git status again, now it will there on branch main, nothing to commit, working tree clean, okay, so this all were the command, so let me come back to my this, okay, so now I want you guys, yeah, so now I want you all guys to take any book or any piece of paper that will never be get lost from you, and I want you guys to write all this code that are showing on the screen, because believe me, since you all are programmer, believe me, you will work 100% of time with git, and this all command you are going to use again and again, like I bet most of our viewers are from first year, so you don't have any idea of how this industry or how we work, so bet
मेरे से बेट लगा लो तुम लोग ये सारे कोड ना वंस यू जस्ट कम इन योर सेकंड सेम और वंस यू गेट लाइक अगर आप हमारे और भी इवेंट्स फ्यूचर में अगर आप अटेंड करेंगे तो अगर आप जितने भी अपनी वेबसाइट कोड चाहेंगे कि दुनिया वालों को दिखे तो यू आर गोइंग टू यूज दिस और कमांड 100% ऑफ टाइम. So we are waiting for 3 minutes. I want all of you guys to write this code inside a piece of book or anywhere because मैंने भी अपने बुक में लिख के रखा हूँ एंड बिलीव मी अभी तक है ना कमांड्स याद रहते नहीं है. यू हैव टू गो एंड ओपन द आई हैव टू गो एंड ओपन द बुक एंड सी ये कमांड था हाँ ये कमांड था ओके. सो जाओ लिख लो बुक में क्या क्या और कौन सा कमांड क्या करता है वो भी लिखो ठीक है. सो जस्ट कॉपी डाउन वॉट एवर आई हैव शोन ऑन द स्क्रीन. So we are waiting for 3 minutes. So it is now 5:12, and after 5:13 I will proceed. And if you guys have any doubt, you can put them in chat box. And also we are going to have a Q&A session at the last. So just stay still. अगर कुछ ज़्यादा urgent है तो पूछो वरना लास्ट में Q&A क्वेश्चन हम रखने वाले हैं. एक मिनट का है तो सिंस लाइव स्ट्रीम में तो आप लोग जाके बार बार देख सकते हो. सो जस्ट अ मिनट या Okay, so that's it for now. Let's give some break to our brain because we have learned a lot and different things. And then after break, and we have break of 5 minutes. Okay, जाना नहीं 5 मिनट का break है. And after break, Daniel will continue. And believe me, guys, अभी तक तो क्या अभी तो बस थियरी था और कोडिंग था. जो असली मजेदार पार्ट है it's going to start after the break. So guys, we are having 5 minute break. And then after break, remember to join because the real fun will start after the break. Bye. Okay. 5 मिनट का बाय.
Hey guys, and welcome back to the session. Due to various technical issue, the stream today has been having a real error. Like first I was having a net issue, and now Daniyal Dolare has the light drawback, so the stream was stopped. I'm really sorry guys. So now we are back, and we are back to session. Now in my session, Daniyal Dolare, will you please share your screen? So it's been sharing. So up till now, what we have learned? We have learned what is version control, what is Git, what is GitHub, and everything we have learned. So now, Daniel Dolare, it's your time to take over the session. Over to you, Daniel. Yeah. Okay. So let's just confirm that our stream is working perfectly fine. Yes, everyone, whoever is watching a stream, just type anything, just type yes, that it's working very good, fine, so that we can continue with our stream forward. Just type a yes. Okay. So that was a very long break because there was a power cut. So you all must have gotten fresh, but we both got stressed, not fresh, because of the power cut. So let's get start. Let's move forward with our session. So previously break, we have learned that Zaki has taught us very good thing about version control, Git, GitHub, and Git workflow, which contains like branching and all the commits and all merging, then installation of Git and also working Git by making a local repository and having making various branches in that, making various commits in that local repository, and also merging two branches. So I hope you all have learned that and you haven't forget that. So let's just move forward. So we will go by visiting the GitHub website. So here this on the screen you can see this is a GitHub website. So as person was asking the difference between Git and GitHub. So Git is a version control system and GitHub is a UI or a website, and GitHub also have application for desktop and also for mobile, where you can host your code in the cloud. That's like in Drive, you put your files and folders in the cloud. It's just like Drive, but it has a lot of features like Git. So GitHub comes inbuilt with the Git, so you can upload your code. You can upload it as an open source, or you can upload it as a closed source project as well. And with the GitHub, when you upload your code onto the GitHub, you can access it from anywhere using your laptop or also using your mobile. So you don't have to carry like your laptop everywhere. You don't have to carry your hard disk or pen drive everywhere where you have your code. Just upload your code to the GitHub, and then you are good to go. So to use the GitHub, and the first thing you have to do is sign up. So for signing up, you will require an email. So let me just enter my email. The link for the website is github.com. You can type it in your browser and you will land onto this page, and then enter your email and click on sign up for GitHub. And onto this page, you have to enter your detail like your username. This username should be unique. So I already have an account which has a username Daniyal Dolare. So you can choose your username wisely. It's like just you have username on Instagram. Don't just put a lot of funky username. Just put a decent one. It will be good. And you also have to choose a password, and also you have to verify your account. So this is a very easy captcha, I can say, finding a spiral galaxy. So this verification is very easy, and also there would be a email verification which you have to do. An email would be sent to your Gmail account, and you have to verify it. So after the successful creation of your account, just sign in into your account, or sign in or log in, you say. Use your credential and sign in into the account. So after signing in, we will land into this page. So this is just like a home page, where you can see this is your profile,
and you have a lot of tabs, and you have like, see these are repositories section, these are team section, and these are some exploring different repositories. Like explore repository, this is someone's, let's say sp04 slash notified is someone else repository, which GitHub is recommending me to just watch and just to collaborate. And here in the center you will see your activity. So in GitHub you do a lot of activities like uploading your code, like collaborating into others code, and making a pull request, making some commits, uh, uh, and reporting some issues. So there are a lot of activities you do. So all these activities will come here. And then the next thing, we will go into our profile. So just go here and click your profile. So here is my profile, Daniyal Dolare, myself, and here is my GitHub profile. And here we have repositories tab, project tabs, and packages tabs. You all know what repositories are. It is a container where you keep your code. So I have like 11 repositories, 11 different kind of code I have uploaded on my GitHub. So let's say, see this, the first repository, it says private. So you can have a private repository, either a public repository. Private repository is only visible to you, and no other person can see it. And public repository is it's public. So when you go to my GitHub profile, you won't be able to see this repository, but you will be able to see all the remaining repositories. Okay, so let's just move ahead. Like you would be thinking that, okay, this is a good thing that we can host our code onto GitHub, we can access it everywhere. So how can you do this? So this is a very easy thing. So let me just show you my PPT. The tour of the website is done, and the next thing is hosting our code to GitHub. Um, so let's say we have our GitHub, we have our code. It can be any project, or can be application, or it can be like some experiment you have done in your college or assignment. It could be anything. So you want to host it on the GitHub. So you need a container. It is your repository, and that repository is also called as a remote repository, which is remote, which is away from you, that is, which is in the cloud. So this thing is called remote repository, and you can access, it can be accessed by anybody from anywhere. Okay, so the next thing we are going to do is we are going to make our own first repository. So when you go to GitHub and you go to profile, you can create a repository by going here new, or else there is icon on the right top side, a plus icon. When you just click on it, just click on new repository. So this is how you can create a new repository. You have to just enter the repository name. So let's just name it my repo. Repo is a shorthand for repository. You can add a description, and you can make it either public or private. I will make it public. And there is three important things here. That is a readme file, a gitignore file, and a license. So license, which you can use like Apache license or GTPL3. There are different kinds of license which you can use for your project, so that no other one can misuse your code or project. And here we have a gitignore file. So gitignore file is very helpful. Let's say in your code you have private credentials like passwords. So you don't want others to see your password. So what you do is you just add the file which contains the password into gitignore. So when you upload your code to GitHub, so the gitignore will scan, okay, so this file is present here, it is added into gitignore. So I will not display this file to others, though it will be there in the GitHub, it will be there, but it won't be available for others. And the next thing we have is a readme file. So readme file is very important. It helps you to describe your repository. So let's say in Instagram, you have your profile and you have your bio. So bio help you describe your profile, where you can write a lot of things, write your text and write your information. And this is where you write your description. Let's say this is where you can write a long description for your project. So let's say I want to build a project for app.
So I will name my repository and I will add a readme file which contains the detail about the app. Okay, what the app do, how you can install the app. Okay, you can also attach some screenshot regarding the app. Okay, this is the UI of my app. So this readme file will help you to gain a lot of attraction. So if your repository have a good readme file, many people will get attracted. So after the creating the repository, this is how your repository look at first. uh, See, we have this initial commit. So when Zaki showed us how to create a local repository, he first have an initial commit. So when you create a remote repository, you also have an initial commit, which Git already does for us. Okay. So now in my repository, I only have one file, which is readme. So as you can see, the readme is also displayed here. So whatever the content in the readme file, this content will be displayed here on your home page of your repository. And there are lots of different tabs. You can see your code. There are issues, pull requests, actions, and a lot of things which we'll explore. Okay, so let's just see our readme file. So in our readme file, we only have one thing, that is my repo. To edit this file into this GitHub UI, just click on this pencil icon. So you can now edit this. So um, let's see, this is title, my repo. You use a hash to express a title. So let's just write a description. This is my first remote repository. Okay, so this is a short description. So after as you edit, you always have to commit. Okay, so in GitHub UI, after every edit in the file you do through the UI, you always have to commit that. So with commit, there is always a commit message. Let's say Zaki already shown that with commit, you always add a message like added feature, let's say added file, or let's say added something else. Here what we are doing is, here we are updating our readme. So the commit message by default, GitHub shows us is update readme. We can also change it like say we can change it to insert description in readme. Okay, so this is my commit message for this change. Okay, so when I add this commit change, let's say now when I go to my repo, the readme file contains the title, my repo, and it also contains description, which now is added. So this readme file is very helpful. You can make your repository look as beautiful as you want. Using this readme, it will attract a lot of people, and yes, that is useful. So then now we have created a remote repository which is in the cloud, which is in the GitHub server. Now what if you want this repository into your local machine? So there is a thing which is called as cloning. So what does cloning do? Uh, so cloning a repository means we have a remote repo which contains all the code. So cloning makes an exact copy of the all the code, all the repository, and it will download all this copy into your local machine. So this thing is called as cloning. So cloning, it's very easy to do clone. And the first thing is you must have installed the Git into a system, which by now you have already done that. So to clone this repository, just go to your repo, and here under this code tab, which is download icon, there is clone. Okay, so in clone, you just add. You can see there are like three things. There are three links. So using these links, you can clone your repository into your local machine. So I will, for now, I will use the HTTPS link. Okay. So let's just open terminal and move to desktop. मत बंद करो.
just move to desktop. And in this desktop, to clone your repository, you have a command git clone and then the URL to the repository. So git clone, I have pasted the URL from here. Okay, when I click enter, sorry, it already exists. Say I will make a new directory here. Okay, I will move to repository and now I will do the git clone. So it will now clone the remote repository into my local system. So let's just see, I have this in under desktop under repository, and under this I have my repo. So here you can see we have a .git file which contains all the git information. Let's say for every repository a .git file is already there, and we have the readme.file. Okay, so let's just see the content of readme. It says this is my first repository, and when we see here this is the readme file, the content is yes, there was an issue that you won't think this must have resolved. Let me ask Zaki, hello, can you check that screen is perfectly visible? Yeah, we were not able to see the GitHub. Yeah, able to see a terminal. I thought I have problem at my end, but then I just realized that it was problem at your end. So yeah, now I can see your desktop screen. Okay, sure. So let me just show you once again. I will delete all changes which I have done here. Okay, so I will open the terminal into my desktop. So let me just increase the size. So to clone this repository, I have to use this command git clone. Okay, so I will write git clone and then I will paste this link, so it will clone the repo. So let's say it says cloning into repo and it's done. So when I see into my desktop, I can find this folder my repo. So now it is visible. So my repo has this .git file, which is a config file for every GitHub repository, and have a .readme file, readme.md file. We can see that the content. Okay, so we have readme here and we have readme. So we have successfully cloned our remote repository to local. Okay, uh, this 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 thing is called as cloning. We only use the command git clone and then the URL for the repository. You can clone any repository you want, which is available on the GitHub publicly. You can clone any repository. You can have it in your system, and you can do a lot of things. You can do editing. You can do changes in the files. Okay, now let's see what we can do here. So I have the repository into my system locally. So let me just create a new folder. Okay, so no, not a folder. Let me just create a new file. Let's say file.txt. Okay, and in this file let me insert some text. And this is a file from local. Okay, so as you can see, now I have two files, a file.txt and readme. But in my
but in my remote repo there is only one file. Even if I refresh here, there is only one file. So to make sure that the changes in both remote repository and local repository, okay, so to make sure that both these repositories have the same files and both these repositories are in sync with each other, what we do is whatever the changes we have made into our local repository, we push that changes into the remote repo. So Zaki has already done like no, Zaki hasn't showed the push command because so, okay. So what I was saying that push command. Okay, about the push command. So the push commands let you push your local changes, the changes which you have onto your local repository into the remote repository. As you can see, we only have we have two files here, but in the remote we have one file. So if you want to make changes, but if you want your remote repository to be updated of time, to be same as the local repo, you make a push from local repo to the remote repo. So to do this, we will open a terminal. So just go to my repo and let's just see git status. What is the status of our repository? So we have to add file. So we will git add dot. It will add all the files and we have to commit git commit dash m file added from local. Okay, so this is the file added in local. So this is the commit message. Let's just see the status. Okay, our branch is clean. So here the as you can see the message here, we are currently on master branch and our branch, which means the local branch is ahead of origin master. So what does this origin master mean? So this origin master is we have our repository cloned from our online repo na. So the origin is the original repository which is available on the remote. As we have cloned it from this repository, so the origin will be the remote repository. So to push do into this repository, we have this command git push. Okay, so it will ask for username. For some user, it may ask to you to config. I have already configured. So let's just type the username and it will ask for password. You won't be able to see my password. I am a hacker. And yes, it says done from master to master. Let's say this thing initially this commit, it changes to this commit. So when I refresh my remote repository, now you can see I have two files. Okay, so yes, our remote repository and local repository both are in synchronization. Say both are at the same commit, both are at the same checkpoint, both are at the same version. Okay, so now what we will do is we will make a branch in our local repo and we will add some feature in it and then we will upload that feature branch into our remote repo. Okay, so to create a branch we have command git branch. Let's name the branch as feature.
So the branch will be created, and to move into that branch, we have the command git checkout feature. So we have switched from master branch to the feature branch. Okay. So now in the feature branch, we only have two files, and in the master branch, we only had two files. Okay. So let's add a file into our feature branch. Let's just add a new document, and we will name it as file2.txt, and this is a feature. Okay, because this file2.txt is created in a feature branch, so I added a message, this is a feature. So let's just add this file into staging area, git add dot, and we'll have git commit dash, and you write a message feature add. So we have one file change and one insertion, and let's say the status of our repo. So our status is clean. So as you can see, when I write git branch here, we have two branches on our local repo, but here in the remote repository we have only one branch. Okay, so the remote repository will be updated only when we push from the local repo to the remote. So it's not like automatically it will get updated. We have to push it, we have to push the changes from the local repository to the remote, and to do that we use git push command. So here I will use the git push, and now I will push it specifically as I am in the feature branch. As you can see, the feature branch, it has star here, so I am currently in the feature branch. So I will push the changes into the feature branch, but there is no feature branch into the remote repo. But you don't have to worry, the GitHub will make a feature branch for us. Okay, so git push, we write origin feature. So origin, which means that the remote repository, and in the origin we have a branch feature. So it will ask again for a username and again for password. So let's say, okay, new branch created. So after this done, when I refresh, you can see we have two branches onto our remote repository. So isn't that cool? You made branches into the local repo, and with just one command like git push origin feature, all the changes which we had done here, it will get synchronized into other remote repository. So here we see we have our master branch and we have the feature branch. So the feature branch contains three files, and our master branch contain only two files. So our feature branch is ahead of the master. The feature is ahead of the master. So this is what this command says. This branch is one commit ahead of master. So let me just visualize you this. Okay, so what we have done, first we have the remote repository, we have cloned it into the local, and in the local we have added a file, and after this file we have pushed it into the remote repository into the master branch only. So our master branch has file which I have already done, which you can see, and then in the local repository we have created one branch, and in this branch we have added another file, and now what we have done is we have pushed this feature branch again to the remote repository. So our remote repository looks like this. We have readme file, we have in the master branch we have only two files, one readme and file text, and in the feature branch we have three files, this readme file and file2.txt. Okay, so now what if you want to merge this, what if you want this file2.txt, the changes which I have added in the feature branch to get merged into the master. So to do this, you can use a feature called pull request. So
the pull request is created by the feature branch to merge the changes from feature to master. So I want to merge this feature to master. So to do this, I just make a pull request. I don't like merge it directly. So in GitHub, we always have some workflow that before merging, we make a request so that someone can review our code and like that. Yes, we will move into that forward. So here that we have this pull request. So let's just compare and pull request. So what it will do, it will create a pull request which the repository owner can see that okay, someone has made a branch, someone has made added a feature, and now he is asking for a pull. He is asking for a pull to the owner कि भाई ओनर, ये मैंने ये फीचर ऐड किया हूँ, मैं तेरे से ये पुल करने की रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ. ओके, दिस इज माय कोड, जस्ट टेक इट एंड मर्ज इट. ओके, so this is how the pull request is. Hello, Zaki. I just saw your repository and I thought of collaborating it. So you might find my pull request right now. Can you see my pull request? Oh yes. Okay. So Zaki now told me that on my repo he just added a pull request. Okay. So Zaki has added some feature. Okay, let me just refresh it. Here you can see we have two. Okay. So here this pull request was just created by me. It is just created by Daniyal Dolare, and this pull request was created by Zaki. Okay. So this repository is owned by me, and Zaki is another person, and who is asking me to merge his changes. Okay. So let's see what changes he has done. So to see that, you have to go into his pull request, and under this there is a commit tab, and in this commit tab you can see what changes he has done. Let's see, he has created a file zaki.txt, and he has written something like, hello Daniel, I saw your repository and thought to collaborate with it. Okay, so this is the term collaborate, which means he wants to work with me, he wants to um, collaborate, which means he wants to give my repository some feature, like give my repository to give me some help in making my repository, in making my project. He wants to help, he wants to collaborate. So this is what he wants to do. So let's see. Okay, so I review this. Okay, Zaki, I am up. Okay, I want to collaborate. So what I will do, I will approve his request. So we have this review changes tab. So what we can do, we can approve his request, or either we can reject or request the changes. Let's say, okay Zaki, I am happy that you are collaborating, you want to collaborate with me. Okay, so let's just collaborate, and I will approve his request of collaborating. Okay, so after the approval, we can merge. Okay, so the step is like, he asked for a pull, he made a pull request. Now to merge, there is also one step ahead. So this is like, okay, he has given me request and I have approved it. Now the work which is remaining is merging. So this merging is very easy in the GitHub UI. You will have this option called merge pull request. So when I click on merge pull request, I have to like write some description or something. So I will leave it like before, and I will confirm the. So when I go to the code, let's say in the master branch, I only had two files, which was readme and a file. And now Zaki has made a pull request, which I have accepted. Now I have Zaki also. And here you can see contributors. So what does contributors mean? So he has now, after his pull request, I accepted his pull request. He has now become contributor for my repository, which means he can contribute code, he can contribute features, and everything he can contribute now.
So Zaki, you are now a contributor. You can contribute a lot of things into my repository. Okay. Okay. So the next thing we have is I have this another pull request remaining, which is for adding a feature. Okay. So I can directly merge this. I can directly merge this feature because this feature was added by me only. Okay, because I am the owner of this repository, so I can directly merge this pull request. Uh, there is no need for reviewing because I have only created it. So I will directly merge that and I will confirm the merge. So after this merge, when I see my master branch, we have 4 files. One file we have already created locally, file text. And file 2 we have got from the feature branch, and this is Zaki.txt, which Zaki has contributed into our repository. So this is the basic thing about pull request and merging. Okay. So I have reviewed the Zaki's pull request and I have merged. So after that, I have 3 files. Okay. So after, okay. So the next thing which I want to show you is repository. So let's just okay. So this is the repository. This is somewhat of intermediate to advanced repository, which you can see here. So in this repository, we have 4 branches. This is about a project. You can see that you can see the we can read the readme. So by reading this readme, you can get the knowledge about what this project is. Okay, so here are all the details. Okay, so this repository have a lot of branches. We can see we have 4 branches, and with these branches we have tags. So what are tags? And tags are generally associated with commits. Let's say I have made a commit, and in this commit my app is completely built and it is working, it is in a stable version, so I will associate a tag of version 1. Okay, so after some more adding features, I will go ahead and I will made another commit and I will tag it as feature 1.2. This is what we have in basic or like application or like anything. When you install the GitHub, we have the version 2.9. So it was just like a version or a tag about the project. So here we also have pull request for this. Okay, so we also have pull request for this repository, and here also this thing called as issues. So when you see any repository, when you want to contribute any repository, you just check that you clone that repository and you test the repository. And after testing, let's say you find a bug, let's say you find something problem, okay, this isn't working fine. So what you can do, you can file a issue into that repo. So to do that, just go to that repo and in under the issue tab, you can add a new issue. So here you can add a title to this issue. So this project is related to classroom, let's say on online something. Uh, so here the issue is that the marks are not deducted after late submission. So this was the issue I faced when I ran this project. Okay, so I will add this title that marks not deducted after late submission. So this is a real issue which this repository has, and I genuinely want this issue to be fixed. So I will post this issue, and I will also leave a comment, or you can also leave some code where this issue was, and you can also insert some pictures and you submit this issue. Okay,
So let's now in the issue tab we have one issue. So the owner of this repository will get a notification like, okay, someone not Daniyal Dolare has made a new issue related to your project, that is marks not detected after submission. So what the owner of this project can do, he can see that, okay, this is a genuine issue, okay, this issue is really faced, so he want to fix. So what he can do, he will fix this issue through a pull request, and he can attach that issue with that pull request, and after this issue is completely resolved, he can close this issue. And the next thing we have are the action. So in the GitHub there are a thing called action, uh, which which are like somewhat of automation. Let's say after you upload a code, so you want that this code to be checked by a system. Let's say you want that, okay, so with an code uploaded, there is also something like testing of code. So this testing of code can be done here by the action. So we can test our code after, let's say, after every commit, this after every commit, or we can say after every pull request, this code can be tested on another system, uh, and that code or pull request can be passed or failed through this action. And we have insights and security. Under the insight, you can see the insight for this report. Let's say we have active 3 pull requests, and we have issues. If there is one new issues, there are a lot of things. And here in the network, we can see this thing. So this is like a commit history, we can say. So he was like committing to the main branch, and then he created this branch, and then he created this branch. He's working into this branch, and then he merged here this branch. Okay, so you can see this thing for most of the GitHub repositories. Okay, so let's just go to our own repository which we have just created. This is my repo, and we have one pull request here. So this is another pull request by Zaki. Okay, Zaki here he is my collaborator. So let's just see what the pull request he has made. So let's just see into commit, and let's see what the changes he has made. So he has added another file, Zaki2.txt, and he says, hello, this is my second file, hope you like it. But why Zaki? Why would I like this? Okay, you have already contributed one file. Now, why do you want to contribute another? This is just useless thing. Oh, why have you done this thing? Instead, you just have added a feature. So I don't want this. So I will just move to this pull request, and under this, under the commits, under here we have review changes. So in this review, I don't want to approve. I just want to, Zaki, don't do these such things. Just add a new feature into my repository. Don't do like, okay, this is my second file, third file. Just don't be selfish, or like don't have so much ego. What you have done, just add a feature that will be helpful for me. Okay, so don't do such things. I will add. Don't do such, sorry, don't do things, only add features. Okay, so for this pull request Zaki had made, because Zaki, this was like useless pull request, I won't approve it. Instead of this pull request, I would be happy if you have add some new features. So I will just submit this, so that make sure next time make changes when he do pull request. So with when he created this pull request,
we can talk to each other, like we have this conversation tab. Okay, so he has done some commit, and with that commit I have submitted a request changes. So Zaki, please do these changes, and then I can review your pull request again after you have done the change. Okay. So let's go to the next thing, which is the code review process. So you can say this as code review process or work review process. So within an organization, let's say we have a manager or senior developer. So senior developer assigns a task, let's say, okay, to junior developer. Okay, junior developer, do this, add this feature into the project. So the junior developer works on that feature, and after he build that, he just go to the senior developer. So just to make sure that he review the code what he has written, that everything is right, that everything is correct, or the feature he is added is working perfectly fine or not. So the senior developer will review that code, and if he find any kind of bugs, so he will request a change. So okay, so there is some bugs in the line 3 or line 4. You have to do the changes. So he then, the junior developer will do the work. He will do the work as per the request or the changes which the senior developer had tell him to make. Okay, so after the completion, he will again go to the senior developer. Okay, here is my code, review it again, and say is this correct or is there any more issue. So the senior developer finds that it is working flawlessly, there are no issues, so he will just accept that, and he will then go on with that feature. Okay, so this is a very important thing which goes in every organization. Let's say, so the tasks are divided to the different team members. So these team members work on their own task, and then after their work is completed, they go to the let's say the you can say team leader. Okay, they go to the team head or team leader, and they tell him to review the work process. So this can be easily done with the git code review workflow. So github has added this feature, and it is very helpful, and already we have done this feature. Let's say you can see that Zaki has made some pull request, you know, and then I have one time I have accepted his pull request, I have approved, and I have merged, and the second time I have rejected, or I can say I have said to him that okay, there is some mistake, you didn't got my point, uh, and you have to make some changes into your pull request, into your code. So what the Zaki will do, he will work on that, and he will make the changes. So this is the basic review code review workflow which GitHub provide, and it is very helpful even for let's say small project, even for the project which you will going to have in the college, we are already having in the college, that mini projects and all and everything. We work as a team, and we review our teammate code, that uh, that it is perfectly fine or working or not. If it's working, then we will merge it to the main branch. Okay, so then moving on to the next thing, we have organizations. Okay, so in the organizations, let's say in some organization called as Amazon. So Amazon have various department or various team or various projects. So let's say Amazon have Amazon Cloud Services, Amazon have Amazon shopping websites, and Amazon have lots of other things. So within our organization, we have different departments or projects, and with for each project, uh, various team works under that project. So the management is quite a bit difficult. So in GitHub, let's say you are creating an open source project. So you are creating an open source project as an organization. So there is a feature of organization into the GitHub, where the management of such projects or such sub departments, sub projects, and sub teams become very easy. So let's just take a look at some organization. Under my own repository, I have created one organization for my mini project. Okay, so
So the organization creation is very easy. It's just like creating a repository. So let's say you go to add icon and you can create a new organization very easily. And in this organization, you can add different members. No. So I have this organization, weird name. Okay. So under this organization, we have three different projects. Let's say an app and website and different application projects. So and we have total of 4 members. So let's say someone is working on app and someone is working on website and someone is working on project. So there are different teams. So we can have different teams. We can create different teams. Let's say the team is of UI team. So this UI team will only work on UI. We can create a new team here. Let's say team name to be backend team. Okay. So backend team. Okay. Let's know. We select it will be visible to all. We will create this team. And in this team you can add members. So let's say you can add members. I don't remember my teammates username, so let's just add them later. So like this you can make different team. Let's say in the organization I have this backend team, so as a team we can do discussions, and under this team we can have our own repositories. Yeah, let's say for backend we have different repository which will work, which have only backend code. So a different team can have a different their own repositories connected to them. So this makes the management very easy. So this is what GitHub do. GitHub helps coder in Git, also Git and GitHub, they both combine and helps coder to do their work efficiently, to do their work as a team very efficiently, to do manage all the codes and all the everything, the pull request, the merging, the issues, all these features and all the GitHub actions. There are a lot of features which are advanced concepts. We will be covering that in, let's say, some in the future. So let's see when we will do that. But all these features, I hope you have understood all these kinds of features regarding Git and GitHub. Okay, so if you have any kind of doubt, you can ask us in the chat box. We will be here for the next some time. We will answer all your questions and answer into the doubt. We will answer all your question which you will ask here. So just post all any doubt which you have. Hello Zaki. Yes, I'm there, but I can't see myself on the screen. Okay. Arey, there's issue. Okay, wait. Just here. Yes, you are moving. Yeah, now I'm moving this time. So I think there are no more questions like the Mohammed Sheikh Fariguddin asked me before that which came first, Git or GitHub. So Git came first. It was released at April 2005, and GitHub was released I guess at 2007. I'm not check when was it released. GitHub release date. So GitHub was launched at April 2008, while Git was launched at. Hello. So am I audible? Yes, your voice was lagging. I Got cut think in between. Git was released as 7th April 2005, while GitHub was released at
April 2008. Like they have not given the exact day, only they have told us April 2008. So if you guys have any doubt, like even a simple doubt, don't hesitate. You can ask us, or if you after like if you people are seeing this stream afterward, you can ask us doubt at our Discord. The link will be in description. I check. Let me guess. Yeah, it is. Is it? Yeah. Yes, yes, So it is yeah, there. links are in the description, so you can go and check and ask any doubt you have. And also we will just tell you also in Discord you will get to know what new events we are going to take in future. So do join us in the Discord and you can chat us. I think there is no any doubt, like no queries are coming, so I think So it's up for now. I hope you guys love the stream, and we are really sorry for the issue or the stream that stopped. I'm really sorry we have technical issues at our end. We hope this will not repeat again in our future events. So okay then, thanks for cheering the code. Daniel, anything you want to say to the stream before ending? no, no, no. I hope you all have understood all the things we have explained. And if you have any doubt, you can reach us at Discord. So that's all about the session. Just for peace and code. Bye bye. Bye bye.